Hello. In today's video, we are trying to learn about the new concept in layer 2 technology, which is called as a spanning tree protocol. In short, इसे STP भी बोला जाता है. It is also called as STP. In order to understand what STP is, we have to revise the basics of switching technology. जब एक स्विच कॉन्फ़िगर करते हैं या जब हम मशीन्स कनेक्ट करते हैं स्विच को, तब स्विच किस तरीके से अपनी एंट्रीज ऐड करता है एंड हाउ डज द थिंग्स हैपन इज व्हाट वी आर गोइंग टू look it up. In order to understand the process, this is the topology. In switch 1, I have connected two machines, P1 and P2, and respectively these are the MAC address of the machines के MAC address है. Same in switch 2, two machines, P2 and P1. These are the MAC address of the respective machines. As soon as I add the machines or as soon as I connect the machines, behind the scenes it is being understood or we have to understand that our process going happens. Address resolution protocol जो concept हमने पढ़ा है, जो concept हमने सुना है, वो process होता है. As soon as the our process happens, switch creates a table, and when it creates the table, this is how we are trying to add the entries into the respective MAC address or MAC table of switches. So S1 के इसमें क्या क्या ऐड होता है ये हम देखेंगे. What are the things which are going to add in the S1. ठीक है, तो यहाँ पे दो फील्ड्स ऐड होती है टेबल पे, इंटरफेस और MAC address. Same here, interface or MAC address. Fine. So let us add the interface first. Quickly let us add the interface. Let us assume कि S1 is connected to fast Ethernet 0/1 interface. इस interface को S1 connected है और S2 के fast Ethernet 0/2 में P2 connected है. Okay, these are the interfaces of switch, not machines. ये समझ लो. Now how does the MAC address is being added? Let us add this one. Interface. Now this is something going to. Okay, this is what the scenario. How does the MAC table adds the entry, or how does the MAC table actually look like? Okay, fast 600 0/1. ओके, ये मशीन है और उस मशीन का मैक एड्रेस क्या है, ये है. तो ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ. तो इस तरीके से एंट्रीज या इस तरीके का मैक एड्रेस टेबल बनता है रेस्पेक्टिव स्विचेस में. सेम अकॉर्डिंगली फास्ट इथरनेट 0/2 और आई एम गोइंग टू ऐड the MAC address. Fine. So this is how the MAC address are being added on a table. MAC table में इस तरीके से एंट्रीज आती है. So this is of S1. Let us quickly add for S2 as well. S2 में भी हम इसी तरीके से ऐड करते हैं. ओके, सो दिस वन एंड a copy one it and this fast Ethernet 0/1 and fast Ethernet 0/2. उस तरीके के अपने अपने मैक एड्रेस ऐड होते हैं. Fine. So these are the
respective entries of S1 and S2. S1 का मैक टेबल ऐसा होता है और S2 का मैक टेबल इस तरीके से होता है as per the topology what we have seen. Now as soon as we connect S1 and S2, यहाँ पे देखो fast Ethernet 0/3 में ये connected दिख रहा है. When we connect two switches, what is going to happen? Behind the scenes, these switches exchange their MAC address table with each other. मतलब S1 का जो MAC address table है वो S2 के साथ exchange होता है और S2 का जो MAC address table है वो S1 के साथ exchange होता है. Behind the scenes, they keep on exchanging. The moment they keep on exchanging, it is for sure the entries are going to add in both the things. तो पहले हम क्या करते हैं, S2 का टेबल S1 में ऐड करते हैं. सो ये किस तरीके से ऐड होता है, मैं पहले ये दोनों के मैक एड्रेस कॉपी करता हूँ और फेच करता हूँ. एंड व्हाट वुड बी द इंटरफेस हियर? अगर S1 को इस मैक एड्रेस को पिंग करना है या पैकेट पहुंचाना है, इफ आई वांट टू सेंड, इफ S1 वांट्स टू सेंड a packet or a frame to this MAC address, which interface should he use? Should he be using the exit point of S1? S1 का exit point कौन सा है, कहाँ से पैकेट भेजना है? It is fast Ethernet 0/3. We have to understand this concept. We have to understand this concept. The exit point. Okay, how should I reach, or with what interface do I have to forward the frame? Of course, I have forwarded to this one. Okay, so in the MAC address table, in the entry of its respective MAC address table, we have to add the interface where we should send the packet. Hope you are understanding it. Certainly, what should be the interface for this MAC address? Same as this one. Same as this one. Okay, look at the, we have to look at the इंटरफेस जहाँ से अपने को पैकेट भेजना है. ओके, अगर S1 को भेजना है इस मैक एड्रेस, तो कौन सा इंटरफेस को ये फॉरवर्ड करेगा? वो इंटरफेस का नाम यहाँ पे ऐड होता है. वो इंटरफेस का नाम यहाँ पे ऐड होता है. दिस इज हाउ मैक एड्रेस टेबल्स आर क्रिएटेड. सर्टेनली इन S2 के केस में ये दोनों भी मैक एड्रेस ऐड होते हैं. अगर S2 को इस मशीन को पिंग करना है, wants to send, सो कौन से इंटरफेस को उसके पैकेट भेजने हैं? जहाँ से ये कनेक्टेड है, सेम एज फास्ट इथरनेट 0/3. फाइन, एंड सर्टेनली फास्ट इथरनेट 0/3 फॉर बोथ द थिंग्स. नाउ दिस आर द एंट्रीज ऑफ मैक एड्रेस टेबल. These are the entries of respective MAC address table, how it is being added. Fine. Now, the things will be good when it is connected to a single interface. अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, switch 1 and switch 2 are connected to a single interface. Now, अब तक हमने ये जाना है during the entire configuration of network कि केबल्स या नेटवर्क इज वेरी मच फ्लक्चुएटिंग इन नेचर. कभी कभी ये लिंक डाउन होती है, कभी फिर से अप होती है, कभी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है. इट इज़ ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग. It is always fluctuating, and we cannot at all rely on a single connectivity. However, for a matter of safety, what most of the organizations do is that they connect, or they try to connect the network with multiple links, and this red line indicates that the another line is being made between two switches. तो अभी S1 से S2 को कनेक्ट करने के लिए दो लाइन है, एक फास्ट इथरनेट 3 वाला
समझ लो। और अभी आपको बनाना है तो यहाँ पे चलो फास्ट इथरनेट 0/4 से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। As a backup plan, okay, this is just as a backup plan. By the way, if there are multiple links between the 2 points, अगर एक नेटवर्क या दो नेटवर्क के बीच में मल्टीपल लाइंस है, then the term is called as redundancy या redundant network या redundancy. This is what it is being called as redundancy. What do you mean by redundancy? In short, multiple routes to reach towards the destination is called redundancy. When there is a redundancy, let us try to understand the concept first. What is going to happen? When there is a redundancy, let us try to understand the concept. कि क्या होगा? पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे। समझ लो ये मशीन ने, ओके, दिस मशीन हैज सेंड ए आप रिक्वेस्ट। ओके, ये मशीन ने आप रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ, perfect. Now, this has been initiated from S1. We know what happens in R. जैसे ही आप प्रोसेस निकलता है, ओके, इट इज गोइंग अक्रॉस ऑल द मशीन्स, मतलब ये स्विच के यहाँ इस मशीन को भी जाएगा, अक्रॉस द स्विच ये फास्ट इथरनेट 0/3 से यहाँ भी जाएगा, और ये इस S2P1 को भी जाएगा। सिंस देर इज अ मल्टीपल रिडंडेंट लिंक, ओके, जैसे ही ये यहाँ पे जाता है, स्विच को जाता है, स्विच विल ब्रॉडकास्ट इट टू P2 एंड P1। नाउ जैसे ही यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स आते हैं, switch also broadcast, okay, because it is broadcasting, he also broadcast this R from fast ethernet 0/4। तो मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से भी आता है स्विच को पास, एंड स्विच अगेन ब्रॉडकास्ट इट्स टू, ठीक है, all the machines. Fine, it again broadcast to all the machines. Fine, so look at it, we are getting multiple app requests from multiple links. Are you getting me? Hope this diagram is visible. Now this problem, okay, with the help of making a redundant link, the first problem that we face is called as, okay, this concept is basically called as broadcast domain, broadcast storm. This concept is basically called as broadcast storm. Broadcast we all know. What do you mean by storm? Storm मतलब साइक्लोन, मतलब फ्लड, मतलब यहाँ पे आप देखते हो कि आप मैसेजेस या ब्रॉडकास्ट मैसेजेस का फ्लडिंग हो रहा है अक्रॉस द नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस का फ्लडिंग हो रहा है। फाइन, दिस इज वन प्रॉब्लम और दिस इज वन सिनेरियो। प्रॉब्लम नंबर टू, फाइन, let us try to erase all these things for a moment because we understood what is broadcast storm. Let us erase this, all the concepts. What about, okay, the next problem is about entries. The next problem is about entries. As soon as app messages goes, we get the reply. The moment we get the reply, okay, look at it.
पहले आप रिक्वेस्ट यहाँ से जाता था और फास्ट इथरनेट 0/3 से एंट्रीज होते थे। नाउ आप रिक्वेस्ट यहाँ से भी जा रहा है और रेस्पॉन्स यहाँ से भी आ रहा है। जब रेस्पॉन्स आता है, हाउ टू ऐड द एंट्रीज, व्हाट हैपेंस इनसाइड मैक एड्रेस टेबल। देखो एक एंट्री यहाँ पे आ गई और एक एंट्री यहाँ पे आ गई। नाउ मैक एड्रेस और switches has the habit of exchanging the MAC addresses repeatedly। एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद हमेशा ये MAC एड्रेस एक्सचेंज करते रहते हैं। हमेशा ये लोग अपनी MAC एड्रेस एक्सचेंज करते रहते हैं। द मोमेंट द एक्सचेंज इट अप, ओके, एक 5 मिनट 10 मिनट के बाद, तो ये देखो अभी फिलहाल एंट्रीज ये आ गई। जैसे ही एक्सचेंज करते हैं ये एंट्रीज, देखो अभी क्या होगा, 003C, ओके, यहाँ पे क्या है, फास्ट इथरनेट 0/1 है, डन। Got the point what it is going to happen, okay, again they keep on exchanging, okay, फिर से देखो ये वाले एंट्रीज देखो फिर से आ गए इधर 002A, हाँ ये 0/3 से है, तो लुक एट इट, फाइन। सो फिर से ये 003 में आ गए, ओके, सो लुक एट इट अगेन, इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग। आर यू गेटिंग मी? ओके, in short, all the false informations are being broadcasted. Blindly, they believe that if I make a change, blindly they are going to accept. No one is going to cross verify such things. No one is going to cross verify such things. This type of problem is called as forwarding loops. This type of concept is called as forwarding loops. Fine. These two are the problems which occurs because of redundancy, but we need a redundancy because we cannot trust the network. We want some sort of flexibility in this. If one fails, immediately backup plan should be running off. So but we have to also find a solution for this. Now in order to find or in order to overcome these solutions, we are following the concept of spanning tree protocol. We are following the concept of spanning tree protocol. Hope you understood the concept. Let me repeat it once again. Why are we using spanning tree protocols? In a network, when there are multiple links across the switch or across the network, redundancy, we create multiple links in order to avoid or in order to make the network redundant. The moment we create redundant, two problems occurs. One is broadcast storm, which means up messages keeps on circulating across the switch, keeps on flooding across the network. And second is forwarding loops. Forwarding loops में, okay, false entries are being added in the MAC address table, which unnecessarily rotates or circulates in the switch, which again unnecessarily creates a false entry. Unnecessarily creates a false entries. Fine. So in order to overcome these both problems, we are using spanning tree protocol. We are using spanning tree protocol. Now what is the simple solution in this? Okay, what in simple terms, what does spanning tree protocol or STP does? Very simple. एक लिंक ब्लॉक कर देता है. In a given two links, one link will be blocked. ये कुछ इस तरीके से ब्लॉक करता है. Now we have to understand कि ये कौन सा लिंक ब्लॉक करता है दोनों में से. And what is the concept of blocking and what is the concept of unblocking? All these concepts we will study in the next video. Fine. This was just an introductory video of STP. Why do we use STP? In the next video, we will learn how STP works. Okay, hope you are following the video. For any queries, feel free to contact me. Thank you for listening.